बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर अरसान अमजद। मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC-101 की तमाम लेसन के कंसेप्चुअल बेस्ड MCQs, जो कि आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 5, रिसर्च डिजाइन इन सोशियोलॉजी। आइए इसके आंसर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक रिसर्च मॉडल इन सोशियोलॉजी? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग अ टॉपिक, रिव्यूइंग द लिटरेचर, फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेलेक्टिंग अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज सोशियोलॉजी रिसर्च preferred over common sense? It is more subjective, it relies on guesswork, it provides systematic and verified information, it uses biased opinions. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, it provides systematic and verified information. Question number 3 है, what does defining the problem in the research process involve? Reviewing previous studies, identifying what you want to learn about the topic, collecting primary data, publishing results. This correct option है B, identifying what you want to learn about the topic. Question number 4 है, which step involves narrowing the step in research focus by understanding what is already known about the topic. Defining the problem, reviewing the literature, collecting data, analyzing the results. इसका फर्स्ट ऑप्शन है बी, रिव्यूइंग द लिटरेचर। ये मैंने आपको रिसर्च मेथड्स के लेक्चर में भी बताया था कि जो रिसर्चर होता है वो रिसर्च करने से पहले पहले ये देखता है कि मैं जिस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहा हूँ, आया क्या इस पे पहले किसी बंदे ने रिसर्च की है। तो अगर किसी बंदे ने इस पे पहले ही रिसर्च की होती है तो वो उसको रिव्यू करता है, उसके जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो नोट करता है, ताकि उसको दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े और वो उसके आगे से परस्यू कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टेटमेंट प्रेडिक्टिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज नोन एज अ रिसर्च मेथड, अ हाइपोथेसिस, अ केस स्टडी, सेकेंडरी डाटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अ हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, which research method involves asking individuals a series of questions? केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, सर्वे। क्वेश्चन नंबर 7 है, a representative sample in a survey means only specific groups are included, the entire population is studied, every individual has an equal chance of being selected, only the majority opinion is included. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, every individual has an equal chance of being selected. Question number 8 है, what is the advantage of self-administrated questionnaires? High control over data collection, large sample size at a lower cost, more accurate data, easier to control variables. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, larger sample size at a lower cost. Question number 9. What is the disadvantages of interviews in surveys? They are quick to administer, they reduce interviewer biases, they can be time consuming, they ensure complete privacy. इसका correct option है C, they can be time consuming. Question number 10 है, which type of research method focuses on a single event, situation or individual? सर्वे, एक्सपेरिमेंट, केस स्टडीज, कैंडिडेट एनालिसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व रिसर्चर रिमेनिंग anonymous, researcher activity engaging in the setting being studied, manipulating variables to observe change, conducting interviews। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रिसर्चर एक्टिवली engaging in the setting being studied।
Question number 12. Which research method analyze existing data collected by others? Case study, experiment, candidate analysis, survey. तो इसका first option है C, secondary data analysis. Question number 13. What is a major limitation of secondary data research? It is time consuming, it may contain inaccurate data, it requires large resources, it is hard to replicate. तो इसका first option है B, it may contain inaccurate data. Question number 14. What type of documents might be analyzed in sociological research? Police reports, diaries, newspaper articles, all of the above. हमारा first option है कि all of the above. Question number 15. Which research method involve directly observing social interactions without interference? Case study, survey, direct observation, experiment. तो इसका हमारा first option है C, direct observation. Question number 16. What is an operational definition in sociological research? A prediction of research outcomes, a method of measuring variables, a review of literature, a method of sampling. इसका हमारा first option है B, a method of measuring variables. Question number 17. Which of the following research design is best suited for studying case-effect relationship, survey, case study, experiments, secondary analysis? तो इसका हमारा first option है C, experiments. Question number 18. Which research method helps understand long-term trends using historical data? Case studies, secondary analysis, observation, experiments. तो इसका हमारा correct option है B, secondary analysis. Question number 19. Which research method often suffers from the problem of generalizability? Survey, case study, experiment, observation. तो इसका हमारा first option है B, case study. Question number 20. Which of the following is not a typically considered a primary research method in sociology? Experiment, observation, survey, secondary analysis. तो इसका हमारा first option है D, secondary analysis. Thanks for watching. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. Please subscribe my channel for more and new updated videos.